स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्शन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियाँ अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब शून्य के बराबर लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes the velocity should come down to something like 146. So on your screen you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis is the altitude. So I think altitude has Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions, and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds. So maybe another 2.5 minutes to go, and we have almost touched the 630 meter per second. So maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, and quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction, and since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second, and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers. When the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है, और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक प्रज्वलित हैं। हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज़ है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख पा रहे होंगे, 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी, और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से, और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है, और
आप सुन पा रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है। और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे। It's finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. 12 minutes. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meter per second. जी हाँ, करीब करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो एंड वो है फेज़ है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। Just waiting for the confirmation for the fine braking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं। After the completion of the fine braking end, we will have the vertical descent operations, where the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. GCS empty. Confirm the करीब 13 मिनट 48 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं, और एल्टीट्यूड जो है वो लगातार कम होता हुआ। We're just waiting for the confirmation. The spacecraft, as we see on the screen, is showing the horizontal and vertical velocity of nearly 48 and 59 meter per second. थोड़े से क्षण जहाँ पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। Confirm any signal from station. Stand by. Negative. No signal from Madrid.
view of the mission control center. सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण, शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. Once we have the updates from the mission control room, we will come back to you. So we just are waiting for the लगभग राधाकृष्ण जी 16 मिनट 12 सेकंड बीत गए हैं और जो वेगमान है वो 48 और 59 ही दिखा रहा है. तो हम अभी आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे. Vodi Vikram, confirm station configuration for receiving both S-band and X-band are configured. That's affirmative. We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. We are just awaiting for the updates from the mission control room. So please stand by. लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर, कंप्यूटर पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके. So view of the mission control center. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चेहरे पर भी उत्सुकता या आंकड़ों का इंतज़ार बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा और मिशन के वैज्ञानिक आपसी डिस्कशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा. ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है. कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए उसके बारे में. So Chairman ISRO just giving briefing to the Honorable Prime Minister of India. So looks like they are just looking at the flight data. All subsystems empty, orbiter operations are on. In fact, at the end of the fine braking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. And if you look at the plots, we are seeing that it has most reached close to a kilometer from the landing site. हम लोग लैंडिंग साइट के बेहद करीब पहुंच गए हैं. शायद इसरो के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री को
कुछ संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अब कक्ष से नीचे आते हुए आप जल्दी ही किसी भी घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हम जो आंकड़ों को अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतर के नीचे आते हुए।
RF to confirm. This is Mission Control Center. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Not a small thing that we have achieved. Be courageous. I'm always there with you. देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए, लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। The Doppler, lot of changes there in the data. Lot of changes in the data. It was towards the interval. Doppler. Fast is over, I think. That team